today we will discussion adaptation age. When we talk about cell, the most important thing is एक चीज होता है हमारे सेटिंग नॉन इक्विलिब्रियम रहता है that is known as homeostasis. जब उसका थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ता है any kind of workload बढ़ गया उसका न्यूट्रिशन मिलना कम हो गया सप्लाई कम हो गया तो वो अडेप्ट करता है अपने आप को which is known as cellular adaptations. अगर वो कंटिन्यू करता है तो सेल को ऑब्वियसली इंजरी हो जाएगा कॉल्ड अ सेलुलर इंजरी व्हिच कैन बी रिवर्सिबल. If it is again continue, it will be irreversible. Irreversible cell injury. If the stress again is continuing and continuing, it will lead to cell death. When we talk about cell death, there are two types of cell death. They can be necrosis or apoptosis. Necrosis is basically an accidental cell death. Usually, हमेशा ये क्या है इन्फेक्शंस के केस में होती है कोई भी इंजरी हो चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल हो चाहे बायोलॉजिकल हो उसमें होता है क्योंकि एपोप्टोसिस एक्सीडेंट्स के साथ साथ प्रोग्राम सेल डेथ भी होता है. द थिंग इज ये फिजियोलॉजिकल भी होता है पैथोलॉजिकल भी होता है. तो लाइक नॉर्मल बॉडी में भी होता है जब आप बड़े हो रहे हो तो आपको कुछ ऑर्गन्स की जरूरत नहीं है दे गो अंडर एपोप्टोसिस. Your T cells are forming, lymphocytes are forming, the cells that are not okay will be removed from the cell cycle. The programmed cell that is known as apoptosis, the accidental cell death is necrosis. So when we look at the sequence, it is homeostasis, adaptations, cell injury, and finally it is cell death. So today we'll be discussing about cellular adaptations. We talked about these things. Stages of the cellular response to stress and injurious stimuli. Normal cell stress में आता है adaptation. अगर adapt कर लेता है तो well and good. Normal reversible भी होता है ये. अगर नहीं adapt कर पाता है या तुम्हारा जो stimulus है वो इतना severe है कि ये बहुत injurious है तो it will lead to cell injury. अगर mild है transient है तो reversible हो जाएगा वापस चला जाएगा normal अपने जैसे था homeostasis में. अगर cell injury severe है या progressive या dual so it leads to irreversible cell injury which is followed by a necrosis or apoptosis. Both are means of cell death. We come to the next thing that is adaptations. What is an adaptation? Adaptation is reversible changes in the size, number, phenotype, metabolic activity or functions of cell in response to changes in the environment. Basically, what are adaptations? After size, number, phenotype, metabolic activity में reversible changes हो रहे हो या उनके function में change हो रहा हो in response to change in their environment. Examples of adaptations. The number one is hypertrophy. What is hypertrophy? Hyper is increase and trophy is size. So increase in the size of the cells that results in an increase in the size of the affected organ. Increase in the size of cells that result in an increase in the size of an affected organ is known as hypertrophy. Basically, how this increase happens? The increased size of cells is due to the synthesis and assembly of additional intracellular structural components, which is what increase in the size बढ़ता है. उसका जितना भी structural component है intracellular अगर वो बढ़ता है उसके through आपका size बढ़ रहा है. Now we talk about pathological hypertrophy. Hypertrophy is increase in the cells. Pathology में कब कब होता है? We've got number of physiological causes also. Uterus हो गया, breast हो गया, in pregnancy and lactation. दोनों उसमें hypertrophy हो रहा है, hyperplasia हो रहा है, but it is not pathological. So pathological hypertrophy examples की बात करें, muscle cells जो होती हैं, striated muscle cells in the heart and skeletal muscles have only a limited capacity for division and respond to increased metabolic demands mainly by undergoing hypertrophy. So, कभी भी हमको जरूरत है, it can be hypertrophy also and hyperplasia also. We'll come to hyperplasia later. तो hyperplasia में number बढ़ रहा है और hypertrophy में size बढ़ रहा है. Any cell that मतलब only hypertrophy will occur in organs and tissues जहाँ पे hyperplasia के chances नहीं हैं, which have a limited capacity for division. Examples की बात करते हैं striated muscle cells in the heart and skeletal muscles of the skeletal muscles. They have only a limited capacity for division and respond to increased metabolic demands mainly by undergoing hypertrophy. The
The most common stimulus obviously is increased workload, hypertrophy of skeletal and cardiac muscles, is increased workload. In both the tissue types, as we discussed before, muscle cells respond by synthesizing more protein and increasing the number of myofilaments per cell. Myofilaments per cell बढ़ेगा, protein बढ़ेगा. This in turn will increase the amount of force each myocyte can generate, and thus the strength and work capacity of muscle as a whole. Both tissue types, what is happening is muscle cells respond by synthesizing more protein and increase the number of myofilaments per cell. क्या होगा? Force each कितना myofilaments का नंबर बढ़ गया तो एक myocyte कितना force generate कर पा रहा है, बढ़ रहा है, thus increasing the strength and work capacity of the muscle as a whole. Physiological hypertrophy, जैसे हमने example लिया था, passive physiological growth of the uterus during pregnancy is a good example of hormone-induced enlargement of an organ that results mainly from hypertrophy of smooth muscle fibers. Uterus में जितने भी तुम्हारे आपका smooth muscle fibers है, उनका hypertrophy होता है. Massive physiological growth of the uterus during pregnancy is a good example of hormone-induced enlargement of an organ that results mainly from hypertrophy of smooth muscle fibers. One more example, pumping, gym builders. The bulging muscles of the bodybuilders engaged in pumping iron result from enlargement of individual skeletal muscle fibers in response to increased demand. So, pathological hypertrophy examples the one and physiological hypertrophy, bodybuilders and uterus during pregnancy. Now, we come towards mechanism of hypertrophy. Hypertrophy is a result of increased cellular protein production. Increased cellular protein production होता है. कैसे? Hypertrophy results from the action of growth factors and direct effects on cellular proteins. Whenever the increased load is detected, the mechanical sensors of the cell they detect the increased workload. Now these sensors activate a complex downstream web of signaling pathways, including the PI3K-AKT pathway, which is important in physiological wala, and G protein coupled receptors pathway, which is important in pathological. Right? So two pathways are PI3K-AKT, which is important in physiological, and G protein coupled receptors, which are important pathological hypertrophy. तो जैसे हमारे मैकेनिकल सेंसर्स ने वर्कलोड इंक्रीज को डिटेक्ट किया, these sensors will activate a complex downstream web of signaling pathways. These signaling pathways will stimulate increased production of growth factors and vasoactive agents. These and the other pathways activate transcription factors, which increase the expression of genes that encode the muscle proteins. तो क्या हो रहा था? वर्कलोड को डिटेक्ट किया मैकेनिकल सेंसर्स ने. अगर फिजियोलॉजिकल है तो दूसरा पाथवे, पैथोलॉजिकल है तो जी प्रोटीन वाला पाथवे. ये हुआ इंक्रीज प्रोडक्शन और ग्रोथ फैक्टर्स का. ये हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को बढ़ावा देंगे, which will increase in expression of genes that will encode for the muscle proteins. Okay. एक और मैकेनिज्म क्या होता है? कार्डियक हाइपरट्रोफी is also associated with a switch in gene expression from genes that encode adult type contractile proteins to genes that encode functionally distinct fetal isoforms of the same proteins. माने कि जो अभी एडल्ट टाइप था वो फीटल में कन्वर्ट हो जाता है. कन्वर्ट का मतलब चेंज हो जाता है. तो ऑब्वियसली जो फीटल टाइप है उसमें तो ग्रोथ ज्यादा होती है. फॉर एग्जांपल द अल्फा आइसोफॉर्म ऑफ मायोसिन हेवी चेन इज रिप्लेस्ड बाय द बीटा आइसोफॉर्म व्हिच इज अ स्लोअर economical and more energetic contractions, right? So the second mechanism was switching gene expression from adult type contractile proteins to fetal isoforms of the same proteins. Other proteins that are altered in hypertrophic myocardial cells are the product of genes that participate in the cellular response to stress. Cardiac hypertrophy is associated with increased ANF gene expression, atrial natriuretic factor gene expression. This hormone causes salt secretion by the kidney, decreases blood volume and pressure, and therefore serves to reduce the hemodynamic load. Right? So what is the third thing that is happening is ANF gene expression बढ़ रहा है, वो क्या करा रहा है? रिटेंशन करा रहा है, तो हेमोडायनामिक लोड अपने आप कम हो रहा है.
के पास कोई भी चीज का अगर ग्रोथ हो जाएगा वो swell up कर जाएगा. Small spindle-shaped uterine smooth muscles हैं from a normal uterus, and this large sperm cells are seen from the rabbit uterus. So हमने जो mechanisms की बात की थी, biochemical mechanisms of myocardial hypertrophy. Basically सबसे important क्या है, mechanical sensors appear to be the major triggers for physiological hypertrophy और agonists और growth factors pathological states में help करते हैं. तो यहाँ पे क्या हुआ, मैकेनिकल परफॉर्मेंस, मैकेनिकल वर्कलोड, तीन चीजें हमने पढ़ी थी. एक्टिविटी में चेंज हो जाता है, सिंथेसिस होने लगता है कन्वर्टाइल प्रोटीन्स का, प्रोडक्शन होता है ग्रोथ फैक्टर्स का. ये सिग्नल पाथवेज कैसे होते हैं, इनपुट जैसे ही वर्कलोड हुआ एगोनिस्ट आए, ग्रोथ फैक्टर्स आए, पाथवे हुए, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हुए, इन सब का सिंथेसिस हो जाता है, राइट. Adaptation that we dealing is hyperplasia. जहाँ पे भी hyperplasia के chances हैं वहाँ पे hyperplasia ही होता है. Only the tissues that are not capable of division या limited division वहाँ पे only hypertrophy होता है. Otherwise these two are usually accompanying each other. Hyperplasia की बात करते हैं. Increase in the number of cells or in an organ or tissue in response to a stimulus. Increase in the number of cells in an organ or tissue in response to a stimulus. Although hyperplasia and hypertrophy are distinct processes, they frequently occur together and may be triggered by the same external stimuli. Although hyperplasia and hypertrophy are distinct processes, they frequently occur together and may be triggered by the same external stimuli. Hyperplasia can only take place if the tissue contains cells capable of dividing, thus increasing the number of cells. It can be physiological or pathological. Physiological hyperplasia due to the actions of hormones or growth factors occurs when there is a need to increase functional capacity of hormone-sensitive organs or when there is need for compensatory increase after the damage or resection. Physiological hyperplasia due to the action of hormones or growth factors occurs when there is need to increase the functional capacity of hormone-sensitive organs. तो most important हमारा क्या है, breast pregnancy में और lactation के time पे. Hormonal hyperplasia is well illustrated by the proliferation of the glandular epithelium of the female breast at puberty and during pregnancy, usually accompanied by enlargement of the glandular epithelial cells. Right? और compensatory hyperplasia किसमें हो रहा है, ये हमारा था hormonal hyperplasia, और compensatory hyperplasia किसमें हो रहा है, liver generation में. Pathological hyperplasia की बात करते हैं. तो most forms of pathological hyperplasia are caused by excessive or inappropriate actions or of hormones or growth factors acting on the target cells. Most important, endometrial या BPH. Endometrial hyperplasia is an example of abnormal hormone-reduced hyperplasia. BPH is another common example of pathological hyperplasia. In this case, as a response to hormonal stimulation by androgens. So, hyperplasia is a characteristic response to certain viral infections also, such as papillomavirus, which cause skin pox and several mucosal lesions composed of masses of hyperplastic epithelium. Mechanisms of hyperplasia की बात करते हैं. The hyperplasia is a result of growth factor-driven proliferation of mature cells, and in some cases by increased output of new cells from the tissue stem cells. For instance, after partial hepatectomy, growth factors are produced in the liver that engage receptors on the surviving cells and activate signaling pathways that stimulate cell proliferation. The third thing that we'll be dealing is atrophy. Atrophy, as the name is saying, A माने कि कम हो जाना. Atrophy इसमें क्या होता है? Hypertrophy और hyperplasia हम अलग-अलग देखते हैं. Atrophy में size कम हो रहा है, plasia size बढ़ रहा है, hyperplasia में number बढ़ रहा है. Atrophy में दोनों चीज कम होती है. Reduction size में भी होता है और number में भी होता है. मतलब दोनों हो सकता है. Reduction in size in organ due to decrease in cell size
as well as number. Can be again physiological and pathological. Physiological, most important examples की बात करते हैं common during normal development. Some embryonic structures such as the notochord and thyroglossal duct undergo atrophy during fetal development. The decrease in size of the uterus that occurs shortly after parturition is another form of physiological atrophy. तो दोनों चीजें नॉर्मल है. फिजियोलॉजिकल पार्चुरेशन के बाद जो यूट्रस का साइज कम हो जाता है और नोटोकॉर एंड थायरोफ्लोसल डक्ट वाला. Pathological atrophy has several causes. It can be local or generalized. Common causes of atrophy: decreased workload, loss of innervation, ब्लड सप्लाई कम हो जाए, हार्मोन्स कम हो जाए, नर्व सप्लाई कम हो जाए, वो न्यूट्रिशन किसी टाइप से कम हो जाए तो राइट. तो डिक्रीज वर्कलोड, डिस्यूज एट्रोफी, denervation atrophy, which is loss of innervation, diminished blood supply, inadequate nutrition, marasmus. Water schitic is also seen in patients with chronic inflammatory diseases and cancer, loss of endocrine stimulation and pressure. So the fundamental cellular changes associated with atrophy are similar in all of these settings. Fundamental cellular changes क्या क्या होता है, मतलब किसी भी वजह से जो nervous stimulation, hormonal stimulation, nutritional supply, blood supply, pressure, diffuse atrophy, किसी भी वजह से हुआ हो, cellular changes are similar. The initial response is a decrease in cell size and organelles, which may reduce the metabolic needs of the cell sufficiently to permit its survival. Means इतना छोटा हो जाता है कि एटलीस्ट वो सर्वाइव कर सके. The initial response is a decrease in cell size and organelles, which may reduce the metabolic needs of the cell sufficiently to permit its survival. In atrophic muscle, the cell contains fewer mitochondria and myofilaments and a reduced amount of rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum इसलिए क्योंकि इस पर राइबोसोम्स चिपके होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसमें. इसमें क्या है, ईआर का नंबर भी कम हो जाएगा, रफ ईआर का नंबर भी, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी कम हो जाएगा, मायोफिलामेंट्स का नंबर भी कम हो जाएगा. By bringing into balance the cell's metabolic needs and the lower levels of blood supply, nutrition or trophic stimulation, a newer equilibrium is achieved. नए होमियोस्टासिस पे आता है कि हम इतने कम संसाधनों में ही अपना वो मतलब they are dealing with it. होमियोस्टासिस है उनका. So by bringing into balance the cell's metabolic demands and the lower levels of blood supply, nutrition, or trophic stimulation, a newer equilibrium is achieved. Early in the process, atrophic cells and tissues have diminished function, but cell death is minimal. Now, what happens in mechanism, as we discussed about, atrophy results from decreased protein synthesis and increased protein degradation. Decreased protein synthesis and increased protein degradation होता है. प्रोटीन सिंथेसिस का डिक्रीज हो जाता है, प्रोटीन डिग्रेडेशन बढ़ जाता है. प्रोटीन सिंथेसिस decreases because of reduced trophic signals. Examples, those produced by growth receptors, which enhance the uptake of nutrition and an increase mRNA translation. So, कैसे decrease हो रहा है protein synthesis? Because of reduced trophic signals, those produced by the growth receptors, which enhance the uptake of nutrients and increase the mRNA translation. The degradation of cellular proteins occurs mainly by the ubiquitin proteasome pathway. So there's a thing called ubiquitin proteasome pathway होता है जिसमें cellular proteins का degradation होता है. Right? तो atrophy कैसे हो रहा है? Decreased protein synthesis और degradation बढ़ाने की synthesis कैसे कम हो रहा है? Reduced trophic signals की मदद से. डिग्रेडेशन कैसे बढ़ रहा है? यूबिक्विटिन प्रोटियासोम पाथवे की वजह से.
nutrient deficiency and disuse may activate ubiquitin ligases, which attach the small peptide ubiquitin to cellular proteins and target these proteins for degradation in proteasome. What is happening is degradation के लिए यहाँ हमने पढ़ लिया कि activation कैसे हो रहा था, मतलब ये protein synthesis decrease कैसे हो रहा था, reduce trophic signaling to enhance the uptake of nutrients and increase mRNA translation. How the degradation is increasing is nutrient deficiency and disuse may activate ligases. Ubiquitin ligases हैं उनको activate हो रहे हैं, which attach the small peptide ubiquitin to cellular proteins. The moment वो ubiquitin pathway, ubiquitin जो मतलब peptide है, वो उन सेल से आके बाइंड कर जाता है. लाइगेज का काम होता है ना जोड़ना, तो क्या होता है लाइगेज बढ़ जाते हैं, ये जाके सेलुलर प्रोटीन से बाइंड कर देते हैं यूबिक्विटिन को, और जैसे इट हेल्प्स एज अ मार्कर, यूबिक्विटिन किसी सेल पे चमक रहा है, ऑर्गेनल पे चमक रहा है, तो वो टारगेट हो जाते हैं डिग्रेडेशन इन प्रोटियोसोम्स के लिए. Now we had the three of them. Now the most important, the fourth one, metaplasia, which is a very important short note also. तो मेटाप्लेजिया, अभी हम तीन पढ़े, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया, एट्रोफी. तो इन सब में क्या कॉमन था कि भाई वर्कलोड बढ़ कम हो रहा था, या फिर न्यूट्रिशन या ब्लड सप्लाई, नर्वेशन, हार्मोन, ये सब बढ़ कम हो रहे थे. अब ओनली अभी इसमें क्या हो रहा है कि एक टाइप का सेल तुम्हारे दूसरे टाइप में चेंज हो जाएगा. सो व्हाट इज मेटाप्लेजिया? It's a reversible change in which one differentiated cell type is replaced by another cell type. One differentiated, one mature type of epithelium changes to another mature type of epithelium. It often represents an adaptive response in which one cell type that is sensitive to a particular stress is replaced by another cell type that is better able to withstand the adverse environment. माने कि वो चीज, वो सेल उस जो भी डैमेज है उसको डील नहीं कर पा रही, जो स्ट्रेस है उसे डील नहीं कर पा रही, तो ऑब्वियसली इट विल बी रिप्लेस्ड बाय समवन who's better at dealing with the stress. The most common epithelial metaplasia is columnar to squamous, as occurs in the respiratory tract in response to chronic irritation. Smokers के केस में vitamin A in the cornea, stones on the excretory duct of the salivary gland, stones, sorry, जब भी stones होते हैं in the excretory ducts of the salivary gland, pancreas or bile duct. Right? So basically one type of mature differentiated epithelium change हो रहा है दूसरे में. कब ऐसा हो रहा है कि जो existing epithelium is not able to deal with the incoming stress, तो it will be replaced by the epithelium जो कि उसको better withstand कर पाए. Most common smokers के केस में जो हमारा पूरा respiratory epithelium starting का है ना, मतलब रेस्पिरेटरी epithelium बेसिकली कॉलमनर, लेकिन जब स्मोक करते हो तो यहाँ पे इरिटेशन होता है, तो इट इज रिप्लेस्ड बाय squamous cells known as squamous metaplasia. So when I say squamous metaplasia, the columnar epithelium is changed to squamous cells. When I say columnar metaplasia, the squamous is changed to columnar. So the most common epithelial metaplasia is columnar to squamous, as occurs in the respiratory tract in response to chronic irritation. Vitamin A in the cornea, stones on the excretory ducts of the salivary glands, pancreas and bile ducts. Now, the influences that predispose to metaplasia, if persistent, can initiate malignant transformation in the metaplastic epithelium. How we say that? It is a double-edged sword. For now, for short time, metaplasia is effective. Double-edged sword means it has got its benefit also and it got its pros and cons also. So, but if it is persistent, how it is saying that the influences that predispose to metaplasia, if persistent, can initiate malignant transformation in metaplastic epithelium. Now, metaplasia from squamous to columnar epithelium may also occur. Most important is Barrett's esophagus. What happens in chronic reflux? जो हमको reflux esophagitis होता है, chronic उसमें होता है, तो to deal with acid prion, we need the mucus cells. तो esophagus का जो squamous lining है, that is replaced. The esophagus squamous lining is replaced by the intestinal-like columnar cells under the influence of reflux gastric acid. Obviously, अगर यहाँ पे squamous cells बदल गए हैं
कॉलमनर सेल्स में, तो कॉलमनर सेल्स का कैंसर पार्ट होता है एडेनोकार्सिनोमा. तो as might be expected, the cancers that arise in these areas are typical glandular adenocarcinomas. So स्क्वेमस मेटाप्लेजिया के एग्जांपल्स थे हमारे, इरिटेशन हो रहा था, विटामिन ए स्टोन्स है किसी डक्ट में. कॉलमनर मेटाप्लेजिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है बैरेट इसोफेगस, in which the esophageal epithelium is replaced by intestine-like columnar cells under the influence of reflux gastric acid. इसमें कौन से कैंसर्स होते हैं? ग्लैंडुलर टाइप के एडेनोकार्सिनोमास. मैकेनिज्म्स, सॉरी, ये जो हमने भी डील किया, देखिए हम जब भी एपिथेलियम की बात करते हैं, स्ट्रोमा की बात करते हैं, आपको दो टाइप के होते हैं. एक होता है पैरेन्काइम जो मेन सेल्स होती है, एंड देन वी हैव गॉट मेसेनकाइम जितना सपोर्टिव स्ट्रोमा होता है. तो जब हम मेटाप्लेजिया को डिवाइड भी करते हैं तो इन पैरेन्काइमल मेटाप्लेजिया एंड मेसेनकाइमल मेटाप्लेजिया. पैरेन्काइमल मेटाप्लेजिया जब बात करते हैं तो वी कैन हैव स्क्वेमस एंड वी कैन हैव कॉलमनर मेटाप्लेजिया. Now we come to the second category of that is mesenchymal. तो mesenchymal में जितना भी सपोर्टिंग स्ट्रोमा आता है कनेक्टिव किसी भी टाइप का, फैट हो गया, कार्टिलेज हो गया, बोन हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, दैट इज ऑल mesenchymal स्ट्रोमा. तो इसमें जब एक टाइप से दूसरे टाइप पे चेंज होता है, इट इज नोन एज mesenchymal मेटाप्लेजिया. तो कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेजिया इज द फॉर्मेशन ऑफ, ऑब्वियसली कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं, formation of cartilage, bone or adipose cells in tissues that normally do not contain these elements. Like अब हम एग्जाम्पल, मतलब bone formation जो होता है मसल में, myositis ossificans, that is osseous metaplasia, bone बन रही है, it occurs after intramuscular hemorrhage, right? So ये second category है connective tissue metaplasia जिसमें mesenchymal transformations हो रहे हैं. bone formation, myositis ossificans, मायो जो मसल है वो बोन में बनता है, ये osseous metaplasia occasionally occurs after intramuscular hemorrhage. This type of metaplasia is less clearly seen as an adaptive response, may be a result of cell or tissue injury. This is not associated with increased cancer risk, unlike the parenchymal metaplasia. Now, very important mechanism, हर चीज का mechanism था ना, तो इसमें इसका mechanism क्या है? It does not, ऐसा नहीं हो रहा है कि यहाँ पे स्क्वेमस का रवि कभी कॉलमनर आ जाएगा. It does not result from a change in the phenotype of an already deep differentiated cell type. Rather, it results from either reprogramming of the local tissue stem cells or alternatively colonization by differentiated cell populations from adjacent sites. So now they get an instructions that अभी ये यहाँ पे बिकॉज क्रॉनिक इरिटेशन है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो स्टेम सेल्स है जिनसे वो प्रॉपर कॉलमनर सेल्स बन रही हैं उसकी जगह स्क्वेमस सेल्स बनेगी. और वैसे यार इट रिजल्ट्स फ्रॉम ईदर रीप्रोग्रामिंग ऑफ local tissue stem cells. In either case, the metaplastic change is stimulated by signals generated by cytokines, growth factors, and extracellular matrix components in the cell's environment. In case of stem cell reprogramming, these external stimuli promote the expression of genes that drive cells toward a specific differentiation pathway. तो हमको पता है कि भाई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए, तो जो भी इंजरी है उसने भी इसको प्रमोट किया है उन जीन्स को that will drive the cells towards a specific differentiation pathway. So these are the mechanism of metaplasia. यहाँ पे either reprogramming हो रही है local tissue stem cells की, or they are getting colonized by the different cell populations from adjacent sites. So ये हमारा एग्जाम्पल एक हम कॉलमनर स्क्वेमस मेटाप्लेजिया का लेके चल रहे हैं. तो ये देखो, दिस इज ऑल कॉलमनर सेल्स. तो कभी भी सर्विक्स में इरिटेशन होता है, जब इरिटेशन बढ़ जाता है फीमेल एनाटॉमी जो होता है ना, फिर वो यूट्रस, सर्विक्स एंड वजाइना. वजाइना स्क्वेमस, यूट्रस इज पूरा कॉलमनर. सर्विक्स में आधा मतलब एंडोसर्विक्स होता है जो ग्लैंड से लाइन होता है. तो यहाँ पे नॉर्मल कॉलमनर एपिथेलियम इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय द स्क्वेमस सेल्स. सो दिस विल बी कॉल्ड एज स्क्वेमस मेटाप्लेजिया. अगर हम इसका पिक्टोरियल डायग्राम देखें, देखो ये हमारे टॉल कॉलमनर सेल्स हैं एंड यहाँ पे धीरे धीरे दे आर गेटिंग रिप्लेस्ड बाय स्क्वेमस सेल्स. स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस सेल्स से रिप्लेस हो रहे हैं. सो दिस इज नोन एज, I mean, it can be example of cervix or bronchus, both metaplasia of columnar to squamous epithelium. यहाँ पे ये ना bronchus, ये bronchus में से change होते हैं. तो this is an example of columnar metaplasia. Thank you.